Are more people feeling lonely than in the past? What can be done to stop people from feeling lonely? This is one of the latest topics in Oxford ELLT Speaking Presentations Part 2. तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और इसकी प्रेजेंटेशन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस जिसमें अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वी हैव टू डेवलप अ क्लियर आर्ग्यूमेंट, वी हैव टू हैव अ वेरी क्लियर ओपिनियन। सबसे पहले तो हमने कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, whether we actually believe that more people are feeling lonely in today's world or not. Generally, मैं आपको दोनों साइड्स की बातें बताऊंगा, आगे फिर सॉल्यूशंस भी बतानी है, because what can be done to stop people from feeling lonely, ये सवाल का हिस्सा है। तो पहले हमने बताना है कि ऐसा है या नहीं और क्यों है और उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, ये पहले बताएंगे। लेकिन ओपिनियन तो आप दोनों तरफ का ले सकते हैं। अमूमी तौर पे देखा जाए तो यानी आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मोर पीपल आर फीलिंग लोनली इन टुडेज वर्ल्ड। आप ये भी कह सकते हैं कि नो, दैट्स नॉट ट्रू, रादर पीपल हैव बिकम मोर सोशिएबल। या दोनों में से जो भी ओपिनियन ले रहे हैं, एक्सप्लेन करना है रीजंस के साथ और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस बतानी है। अब अगर हम नो बताएंगे, यानी अगर हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर सॉल्यूशन डेवलप करना मुश्किल होगा। तो अगर आपका ओपिनियन ऐसा नहीं भी है तो भी आधी प्रेजेंटेशन है ही इसी बात पे कि सॉल्यूशंस बताए जाएं। तो इसीलिए ला महला वी विल हैव टू से कि हाँ ऐसा है। तो फिर अगर आप इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं कि दोनों साइड्स को डिस्कस कर लें, तो फिर आप बता सकते हैं कि ऑल्दो बहुत सारा सोशल मीडिया है, बहुत सारी डिजिटलाइजेशन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशलाइज करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ऐसा है कि लोग लोनली फील कर रहे हैं। तो ये एक परफेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। तो अगर आप नो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लोग लोनली फील नहीं करते ज्यादा एज कंपेयर टू पास्ट, तो फिर आगे जो सॉल्यूशंस पूछें वो सॉल्यूशंस तो तभी बता सकेंगे। तो सॉल्यूशंस ही कैसे बता पाएंगे? तो 5 मिनट की प्रेजेंटेशन ही पूरी नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे कहना है कि ऐसा है। और वैसे भी इन्होंने जो गिवन स्टेटमेंट दी है ऊपर रेफरेंस के साथ, आई थिंक इट वाज सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़पेपर, जहां से उन्होंने कुछ कैप्शन लिखा था कि अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च ज्यादा पीपल कह रहे हैं कि दे आर फीलिंग मोर लोनली। तो ये अब एक आर्ग्यूमेंट डेवलप करना पड़ेगा। तो अब इसको वंस अगेन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फॉर्मेट हर प्रेजेंटेशन के टॉपिक में बता रहा हूं कि सबसे पहले वो टॉपिक पूछते हैं। अमूमी तौर पे ये ट्रेंड है और टॉपिक जब पूछेंगे तो अगर नहीं भी पूछते तो जाहिर है कि यू कैन गो विदाउट इट, लेकिन जनरली जब टॉपिक पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज करके जो भी टॉपिक है वो बताइए। फिर उसके बाद आपको वो इंस्ट्रक्शंस बताएगा कि 3 to 5 मिनट्स बोलना है। एंड नोट्स आप ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं नोट्स से, लेकिन आप रीड नहीं कर सकते किसी स्क्रिप्ट से। और मुझे डायरेक्ट एड्रेस करो, कैमरे में देखो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बातें तो नॉर्मल है और ये कई बार मैं कर चुका हूं। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, इसको कैसे सॉल्व करना है। इस तरह से शुरू करेंगे। आई विल नाउ बिगिन माय प्रेजेंटेशन. Today I'm going to discuss whether people are feeling more lonely as compared to the past, and I'm also going to suggest some solutions to somehow solve this problem. Although in today's world, there are more people who have opportunities to connect with other people from around the world on social media platforms. However, there are lots of reasons why I believe that more people are feeling lonely despite of all these facilities. एंड फिर उसके बाद एक एक करके रीजंस। इसमें हमने ये कहा है कि अगरचे के ऐसा जरूर है कि बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, सोशल मीडिया है वगैरह वगैरह, आप दुनिया भर में लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग लोनली ही फील करते हैं। अब उसकी रीजंस हमने कहा कि हमारे पास हैं। तो सबसे पहली रीजन क्या है? सो द फर्स्ट रीजन इज सोशल मीडिया इटसेल्फ, आयरोनिकली, बिकॉज the longer the screen time is, the weaker the relationships that we have with people. So we actually become socially isolated if you're spending more time using social media. So we are trying to actually connect with people on social media, but that is not a true relationship. For example, the followers on social media are not real followers in your life. The friends on social media, for example, on Facebook, the term used for the people who are connected with us is friends, and they're not the real friends in our life. So the real friends might not be even there on social media sometimes. Maybe they're on some other platforms and we are not on the same platforms. It is possible. So the real friends
and the friends on social media, real followers and the followers on social media are not the same people. So because of this misconception that the friends and the followers on social media will be the actual friends in our real life, this confusion, this misconception is one of the reasons that why people are feeling more lonely, because when they want real people, when they need people in their lives, they cannot connect with them because they have not been in touch with them due to their connection with the people on social media. So ये एक बड़ा interesting concept है. इसमें आप example दे सकते हैं. For example, I have around 786 friends on my Facebook account. However, in real life, I might not even have 10 of them. So this is one of the examples that why might people feel more lonely in real life. तो आप इसमें इस तरह की भी एग्जांपल दे सकते हैं कि कुछ लोगों को रियल लाइफ में उनके फ्रेंड्स ज्यादा होते ही नहीं है, बल्कि फ्रेंड्स ही नहीं होते, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सोशल मीडिया पे होते हैं. इस तरह के कैरेक्टर्स आपको जिंदगी में मिलेंगे, आप उनकी बात कर सकते हैं. अगर 6-7 फ्रेंड्स हैं भी तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, दे आर नॉट अवेलेबल 24/7. They're busy in their lives, so they could be available once a month or maybe once a year sometimes if they are living in some other city. Even if they are living in the same city, they might be busy in their lives because cities are a very busy life. तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक रीजन है. दूसरी रीजन क्या है? The second reason is, even if you do have more friends, most of them are busy in their life. The modern lifestyle, the urban lifestyle is actually a fast-paced lifestyle. So where people do not have a lot of time to spend with others. So this is one of the reasons. तो दूसरी रीजन ये हो गई, लोग मसरूफ हैं. Another reason is changing family structures. In the past, people used to live in joint family systems, but in the modern life, most people live alone or sometimes in nuclear family systems, so they do not have their family members all around with them throughout the day. Because sometimes it's out there, people need people throughout their day. When they're at work, they have their colleagues. When they're in their school, they have their friends, their fellows. When they are at home, they have family members, their siblings, their parents, their kids and stuff. However, आज की जिंदगी के अंदर लोग जो हैं उनके साथ ज़ाहिर है कि हर वक्त तो लोग नहीं होते कि खास तौर पे वो अकेले रहते हैं. Especially अकेले क्यों रहते हैं? Because sometimes they have jobs in different cities. For example, they basically come from maybe a town or a village, but they have to work in a big city and they cannot take their families there. Maybe their families are not with them. Maybe they don't want to live with them. For some reason, they are all alone, living in flats, apartments, without family. तो ये भी एक रीजन हो सकती है कि इंसान जब अकेला रहता है तो ये भी प्रॉब्लम आती है कि ज़ाहिर है कि feeling lonely. Another reason is FOMO. FOMO stands for fear of missing out. जब वो देखते हैं कि सोशल मीडिया पे उनके फ्रेंड्स, कजन्स, सिबलिंग्स, ब्रदर्स, daughters, sons, everyone is posting on social media, me with my friends, वाली गलत इंग्लिश में. By the way, it should not be me with my friends, it should be my friends and I. However, वो देखते हैं कि everyone is posting कि भाई ज़बरदस्त लाइफ जा रही है, मीटअप्स हो रहे हैं जी, हाइकिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है, रेस्टोरेंट्स में खाना खाया जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह. जब ये सारी चीजें देखते हैं तो वो कंपेयर करते हैं अपनी रियल लाइफ को उस रियल लाइफ के साथ. सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई पीपल माइट फील लोनली इन टुडेज वर्ल्ड. अनदर अगेन दिस इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू लाइक यूजिंग सोशल मीडिया और स्क्रीन्स, यानी मोबाइल फोन्स के साथ, इंटरनेट के साथ ये दोबारा कनेक्ट होगा. ये भी एक चीज है. इसके बाद अब जब ये रीजंस बता दी तो अब हम जाएंगे सॉल्यूशंस की तरफ कि क्या सॉल्यूशंस हम सजेस्ट करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस नाउ. Solution number 1. There should be cultural and religious centers where people could gather as a community, engaging with each other. And the other solution could be, conducting different social events. These events merely could only be for the sake of entertainment or enjoyment or merrymaking, or just to like spend some quality time. तो ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं. इसमें like it's not essentially a building, like it could be a park where people are encouraged to go. So again, it is also connected with the concept of raising awareness. Raising awareness is important because sometimes people need to hear it from someone. Another solution could be neighborhood watch programs, जिसमें अपने surroundings में लोगों को देखा जाए कि who is lonely, who needs help, who needs support, who needs some guidance, who needs some entertainment. मतलब इस तरह की चीजें भी इसके अंदर आती हैं कि आप अपने community से awareness. If someone is struggling with health, finances, social relationships or personal relationships, whatever, people should be there to support them. In addition to this, there should be cinemas, and the cinema going should be encouraged as well. There should be
gardens, parks. Again, there should be places where people could gather. For example, there could be gaming zones like in the past. I mean, you could say that we can play games at home as well. That's the thing. That's why people are feeling lonely. Another thing is family bonding. Even if people are not living in a joint family system, at least उनको अपनी bonding अपनी मजबूत करनी चाहिए, relationships अपने मजबूत करने चाहिए, और उनको चाहिए कि अपने family members, even if they are not living with them, they should visit them like frequently, so that that bond, that relationship between them is stronger and stronger with every passing day. Not only that, but there should also be some mental health support. Mental health support इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर लोग social interaction कर भी रहे हो तो sometimes they feel lonely, अंदर से lonely होते हैं. So for that there should be some psychological support given by experts. उसके लिए they should be of course visiting any psychiatrist. And there should be free seminars and webinars conducted on behalf of government and non-government organizations so that people are aware of how to tackle these things, like mentally, because it's a war with situations sometimes. These are some of the solutions that I can think of right now, but if you have any solution, you can mention them in the comment box. And अगर आप टेस्ट के दौरान कोई और ख्याल आपका उभरता है, well and good, but मैंने कैप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रेजेंटेशन के पूरे बुलेट पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा भी थोड़े से रखे हुए हैं, you can take help from there. Wish you all the best. Thank you very much. Bye bye for now.